Thank you for joining us on This Is Exclusive, getting in back-to-back breaking responses to the big story from the south of India. In Tamil Nadu, Stalin did something yesterday and he's playing with fire because people across Tamil Nadu are writing in. They're angry with what Stalin is trying to do. That's our big exclusive. We have some exclusive responses to the story this evening on the show. And then Taliban has hit back at Pakistan. Story is getting very interesting. Here are the headlines on This Is Exclusive. The language war in Tamil Nadu is escalating. Nationalists fighting back, questioning Stalin's intent. स्टालिन देशद्रोह कर रहे हैं, राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं। जो हरकत वो कर रहे हैं उसमें पूरे देश में वो तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। Anger across India as different political parties tell Stalin he's playing with fire and that he will end up getting burnt. Assault within the Golden Temple premises. Two arrested, rod-wielding assailants target devotees. पूरा घटना को कंडेम भी करता हूं और साथ में मैं यही भी बोलूंगा कि ये घटना से पूरा लेफ्ट जनता का सामने एक्सपोज हो चुका है। Massive support for Team Republic Bangla. Chief Minister, stop politicians, jurists, the public supporting Republic Bangla after what happened at the Jadavpur University campus on Thursday. What Stalin tried to do by replacing the rupee symbol, which was, by the way, created by someone from Tamil Nadu, a Tamilian called Uday Kumar Dharmalingam, was the creator of the rupee symbol, and that symbol was replaced by Stalin government yesterday. And Annamalai is heading back at the Stalin government. Spoke to Republic TV this evening, a few minutes back. Annamalai slamming Stalin, saying that his idea is stupid. That was Annamalai saying Stalin's idea is stupid. Talking about why it is stupid, here is Annamalai, who has said that even the rupee in Tamil, even the ru in rupee is derived from Sanskrit, saying that it's really stupid for him to do that. Here's what Annamalai said, the conversation with Republic earlier today. Would have felt, why did they do all the drama yesterday? This is a state, if you look at the budget, the overall debt has hit 9.6 lakh crore. We are the highest debt state in the country. Market borrowing, they have borrowed 1,62,000 crore. No state has borrowed 1,62,000 crore. A state like Gujarat with zero liquor revenue is able to present a surplus budget of 19,965 crore. Tamil Nadu, despite 50,000 crore liquor revenue, we are presenting a budget with a revenue deficit of 46,467 crore. Now, there is no comparison. This state is decelerating. It is going down. All parameters and indicators are pointing to a fact. Tamil Nadu is losing our competitive advantage. To hide it, they want to change symbol. They want to do this. Okay. They say, oh, I don't want Devanagari script. That is why I have removed this. Now they put ru. Ru has come from rupaya, which is a Sanskrit word. Will we demolish ru also and throw it to the dustbin? Because it has got a Sanskrit origin. Now we have become that stupid. Tamil Nadu government, every day you create more controversy. Finally, after the controversy, there is more egg on people's face in Tamil Nadu, especially the ruling politicians. What Stalin has done is try to create a north versus south divide. He's been trying to do that for a very long time. In fact, even his allies in the Congress party tried to do that. For example, DK Suresh, who's the brother of DK Shivakumar, the deputy Karnataka chief minister, DK Suresh himself is an MP, tried to suggest at one point that the way things are going, Karnataka and the south may be forced to break away as a country. Now, what Stalin has tried to do is push that idea further. Here's what Sanjay Nirupam said of the Shiv Sena, slamming the secessionist
tendencies of Stalin. Listen in. MK स्टालिन देशद्रोह कर रहे हैं, राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं। जो हरकत वो कर रहे हैं उसमें पूरे देश में वो तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। 2010 के आसपास रुपीस का एम्बलम अनाउंस हुआ था और उस रुपीज में सिर्फ हिंदी नहीं है, अंग्रेजी भी है। उसको रिप्लेस करके जिस तरीके से वो तमिल में रुपीस दे रहे हैं वो और कुछ नहीं, बेवकूफ़ी और पागलपन है। यह देश एक है, इसमें तमाम क्षेत्रीय भाषाएं हैं। उन भाषाओं की बड़ी बहन हिंदी भाषा है और तमाम क्षेत्रीय भाषाओं को, हिंदी भाषा को अपनी बहन के तौर पे स्वीकार करना चाहिए, मिलजुल करके आगे बढ़ना चाहिए। तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर ऐसे तमिलियंस हैं जो तमिल लैंग्वेज के साथ साथ जो उनकी मातृभाषा है वो सीखने के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी दोनों सीखते हैं। MK स्टालिन कोई 50 साल पुरानी एक व्यवस्था को जबरदस्ती लागू करने के चक्कर में परेशान हो रहे हैं। मुझे लगता है आज के तमिलनाडु को नहीं जानते वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। और आज का जो तमिल नौजवान है वो तमिल, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषा में विश्वास करता है, तीनों भाषा सीख रहा है। ये व्यक्तिगत राजनीति चमकाने की, या यूँ कहे कि तमिलनाडु बेस्ड राजनीति करने के लिए पूरे देश भर में वो विवाद खड़ा कर रहे हैं। देखिए, तमिलनाडु में जो पॉलिटिशियन रहे हैं वो आज नहीं 50 साल से लगातार हिंदी विरोध की राजनीति करते रहे। लेकिन आज के दौर में आप देखेंगे तो बड़े पैमाने पर तमिलियंस नौजवान जो है ना वो अपनी मातृभाषा के साथ साथ हिंदी भाषा सीखने में उत्सुक हैं। अंग्रेजी तो उनकी भाषा है, अंग्रेजी वो सीख रहे हैं। बहुत जरूरी है अंग्रेजी सीखना, क्योंकि पूरी दुनिया में आप जाते हैं अंग्रेजी सीखने, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में अगर आपको कनेक्ट करना है तो हिंदी भाषा अनिवार्य है। हम जबरदस्ती थोप नहीं रहे, आप अपनी मातृभाषा को बचा के रखिए। हम आपकी मातृभाषा का सम्मान करते हैं, लेकिन अपनी मातृभाषा के सम्मान के नाम पे हिंदी भाषी का अपमान, हिंदी भाषा का अपमान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये गलत कर रहे हैं MK स्टालिन। It's also a top focus in prime time today as Arnab picks up that subject at 9 p.m. as nationalist versus secessionist debate breaks out. Moving on to our next exclusive news break. The Taliban has been blamed by Pakistan for the train hijack, where many Pakistani commanders have been killed. Pakistan hasn't given a clear number. Taliban government, Taliban ministers, that is, in Taliban run Afghanistan, Taliban commanders included, have hit back today, almost mocking Pakistan for the state of affairs in their own country. Listen in. अस्सलाम वालेकुम। सब पाकिस्तानी भाइयों के लिए मेरा पैगाम है कि बलूचिस्तान में 450 फौजी अर्गमाल हुआ है। तो अभी पाकिस्तानी मीडिया कह रहे, फौज कह रहे कि इसका मास्टरमाइंड अफगानिस्तान में था। नहीं भाई, हम पाकिस्तानी आवाम के लिए बहुत एहतराम और दिली हमदर्दी रखते हैं। मेरा एक सवाल का जवाब दे दे। टैक्स, मालिया, पैसा फौज लेता है और बाबा जोन्स और ऑस्ट्रेलिया में जजीरे बनाता है। आपके आर्मी चीफ जब रिटायर हो जाता है तो लंदन जाता है। आर्मी चीफ जस्टिस रिटायर हो जाए तो लंदन जाता है। फौज के सरबराह रिटायर हो जाए तो अमेरिका जाता है। तो ये मुल्क कौन चलाता है? मालिया भी लेता है, टैक्स भी लेता है, तनख्वाह भी लेता है। तो फिर एटमी ताकत होने का दावा भी कर रहा है, तो क्यों अपने मुल्क का अमनियत नहीं संभाल सकता है? ये कोई बात है, कोई दलील है? क्या आप कर रहे हैं कि अफगानिस्तान से है? अस्सलाम वालेकुम। सब पाकिस्तानी भाइयों के लिए मेरा पैगाम है कि बलूचिस्तान में 450 फौजी अर्गमाल हुआ है। तो अभी पाकिस्तानी मीडिया कह रहे, फौज कह रहे कि इसका मास्टरमाइंड अफगानिस्तान में था। नहीं भाई, हम पाकिस्तानी आवाम के लिए बहुत एहतराम और दिली हमदर्दी रखते हैं। मेरा एक सवाल का जवाब दे दे। टैक्स, मालिया, पैसा फौज लेता है और बाबा जोन्स और ऑस्ट्रेलिया में जजीरे बनाता है। आपके आर्मी चीफ जब रिटायर हो जाता है तो लंदन जाता है। आर्मी चीफ जस्टिस रिटायर हो जाए तो लंदन जाता है। फौज के सरबराह रिटायर हो जाए तो अमेरिका जाता है। तो ये मुल्क कौन चलाता है? मालिया भी लेता है, टैक्स भी लेता है, तनख्वाह भी लेता है। तो फिर एटमी ताकत होने का दावा भी कर रहा है, तो क्यों अपने मुल्क का अमनियत नहीं संभाल सकता है?
ये कोई बात है, कोई दलील है कि आप कर रहे हैं कि अफगानिस्तान से है? Okay, Bahut Baloch. We have someone live from Baluchistan today. Bahut Baloch is joining us live from Baluchistan. He's a journalist in Baluchistan. Bahut जी, ये जो हो रहा है, पाकिस्तान को पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, क्योंकि उनको पता था कि बलूचिस्तान में सब ठीक नहीं है और अभी तालिबान को ब्लेम कर रहे हैं, इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं। हो क्या रहा है आज का सिचुएशन क्या है बहुत आज वहाँ पे? जी, आज के सिचुएशन के बाद आपके दूसरे सवाल की जानिब आते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है पाकिस्तान फौज के तर्जुमान और वजीर आला बलूचिस्तान की जानिब से। उनकी जो ट्रेन हाईजैक के हवाले से उन्होंने क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का लबुलुबाब यही है कि यही इल्जामात दोहराए गए हैं। जैसे कि अफगानिस्तान का नाम लिया गया है, फिर इंडिया का नाम लिया गया है। मीडिया को बहुत ज्यादा उन्होंने बार बार दोहराया है कि मीडिया की जानिब से इनको यूरो पेश किया गया है, इनको कवरेज दी गई है, यही बातें दोहराई गई हैं। बाकी ऑपरेशन के हवाले से जो कुछ उनके दावे थे उन्हीं को रिपीट किया गया है। आपके सवाल की जानिब अगर आए तो बलूचिस्तान का मसला आज का नहीं है, जब से पाकिस्तान वजूद में आया हुआ उसी वक्त से चल रहा है। तो ये इल्जामात दोहराए जा रहे, कभी पहले की जो गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान की उनके ऊपर लगाए जा रहे थे, अभी जो गवर्नमेंट नहीं है तालिबान की उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, या दूसरे हमसाया ममालिक की जानिब लगाए जा रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ जो कुछ है वो अपने लोगों को थोड़ा सा इस तरह की बातों में उलझाना चाहते हैं। फिर उनकी जानिब से जो मीडिया की कवरेज वगैरह पाकिस्तान की खुद की यही चीजों को रिपीट करते हैं, सिर्फ अपने लोगों को एंगेज कर सकते हैं। लेकिन जो तज्जिया निगार है, जो लोग इन चीजों पे गौर कर रहे देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ चल रहा है वो कुछ और ही बयान करते हैं। ये नई बात नहीं है, शुरुआत से ही यही सब कुछ चलता रहा है, इल्जामात लगाना इस तरह की चीज। जैसे कि अफगान गवर्नमेंट के आपने कमांडर की वीडियो चलाई और इनके जो वजारत है उन्होंने भी एक बाकायदा ऑफिशियल बयान दिया है कि आप अपने अंदरूनी मामला संभाले बजाय आप दूसरों के ऊपर इल्जामात लगाए। आपकी फेलुअर है, आपके एहलकार यरगमाल बनाए गए हैं, आपका जो ट्रेन है हाईजैक हुआ है उसको आप संभाल नहीं सके हैं, अभी दूसरों पर आप इल्जाम लगा रहे हैं। जी, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। अभी जो कैजुअलिटीज है यहाँ पे, कितने पाकिस्तान के फौज मरे हैं, कितने को एग्जीक्यूट किया गया है, वो उसका नंबर हमारे पास नहीं है। आपके पास वहाँ का जो नंबर है वो नंबर क्या है और इसको छुपा क्यों रहे पाकिस्तान? बिल्कुल, यहाँ पर नंबर एग्जैक्ट नंबर नहीं है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने जब लास्ट अपने बयान दिया तो उसमें कहा था कि 100 से ज्यादा हमला कर चुके हैं, जिनमें जो यरगमाल बनाए गए थे, जो बंदी बनाए गए थे वो, और उसके साथ वहां पर झड़पें हुई, क्लैशेस हुए, उनमें बहुत से पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं। तो इस हवाले से उनकी तादाद 100 है, 100 से ज्यादा है। बाकी फौज की जानिब से, पाकिस्तान फौज की जानिब से यही कहा गया कि हमारे सिर्फ 3 एहलकार मारे गए, जबकि हम खुद सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि यहाँ पर तस्वीर की बरमार है कि इतने ज्यादा तस्वीर शेयर हो चुके हैं। खासकर इनकी अक्सरियत की तादाद जो कश्मीर रीजन है उस जानिब के फौजी एहलकार हैं, अक्सरियत उनकी है कि उनका पूरा बटालियन हुआ है, इनमें सब वही मारे गए हैं, लेकिन उनकी जानिब से इनको बिल्कुल काउंट ही नहीं किया जा रहा। यहाँ तक कि जो कोयटा से ताबूत भेजे गए थे उनके हवाले से इनके पास कोई बयान नहीं है अभी कि हम क्यों ये सब ले जा रहे थे, सिर्फ वो 3 कैजुअलिटीज मान रहे हैं। हालांकि जो लोग वहां थे, जो यरगमाल बनाए गए तो उनमें से बहुत बड़ी तादाद मारे गए हैं। और दूसरी जानिब फौज की दावा कर रही है कि हम 33 मिलिटेंट्स को मार चुके हैं, लेकिन वो भी वो दिखा नहीं सके हैं कि 33 मिलिटेंट्स की लाशें कहाँ हैं, उनकी शिनाख्त हुई है नहीं है, कहाँ गए वो, कहाँ गए वो, कहाँ है? हम तो उसको देखा नहीं, कहीं पे उस विजुअल को देखा, लेकिन मेरे पास एक विजुअल है बहुत जी, मैं उसको दिखाना चाहता हूँ। मैं जस्ट पूछ रहा हूँ हमारी टीम से कि वो वीडियो है कि नहीं, क्योंकि हमारे पास एक वीडियो आया था आज सुबह। उस वीडियो में वो ट्रेन दिख रही है और ट्रेन के जो बोगीज है, बोगीज के नीचे इतने लाशें पड़े हैं और एक जो पैसेंजर जो वहाँ से भागा था, और इसी शो में हमने ब्रेक की थी कि ऑलमोस्ट 70 to 80 लाशें उन्होंने देखा था, और इस वीडियो में वो दिख रहा है। इफ यू हैव द वीडियो, कैन वी शो द वीडियो राइट नाउ? आई विल जस्ट प्ले दैट वीडियो। लेकिन बहुत सारे लाशें हैं वहां पे जो दिख रहा है वीडियो में।
बिल्कुल, अगर आप इनको देखिए, वो वीडियोस आई हैं, वहां पर बहुत ज्यादा लाशें पड़ी हुई है जो पाकिस्तानी फौज के एहलकार है जिनको मारा गया है। फौज की जानिब से ऑपरेशन का आगाज किया गया। बलूच लिबरेशन आर्मी ने कहा कि इसके जवाब में हम 10 एहलकार मार रहे हैं, फिर उन्होंने कहा कि हम 50 मार रहे हैं। ये वही लोग हैं। बाकी कुछ और तस्वीर भी आई है, आपके पास मौजूद है या नहीं? फौजी एहलकारों की भी लाशें पड़ी हुई हैं जिनको मारा गया है। डीजीएसपीआर ने एक बात यहाँ पर कही कि जो मिलिटेंट्स थे उनके भी स्नाइपर्स बैठे हुए थे। यानी पहली रात को बहुत बड़े पैमाने पर एक क्लैशेस हुए हैं, वहां पर उनको नुकसान का सामना करना पड़ा है। लेकिन यहाँ पर बलूचिस्तान, खासकर पाकिस्तान और फिर बलूचिस्तान की हवाले से इनकी मीडिया, इनकी आईएसपीआर के बयानात इसी तरह होते हैं। जो आईएसपीआर मीडिया है ना बाबू जी, ऐसा है कि दो तरह के मीडिया होता है। हर देश में 2 तरह के मीडिया होते हैं। और मेरे साथ अभी एम्बेसडर दीपक वोरा भी है। वो इंडिया के सबसे बड़े डिप्लोमेट बन चुके हैं। ही इज बीन एन एम्बेसडर टू मेनी कंट्रीज। दीपक वोरा जी, यू नो इट्स सो फनी, दीपक वोरा जी, because they claim that they've neutralized so many Baloch rebels, right? We haven't seen any of these bodies except for a few. But what I have seen in the videos, and I will play that video in a short while from now, I have seen Pakistani soldiers' bodies lying below the train. I will play that video in just a few seconds. It's just being pulled out, treated, Surely, right? surely. Now, what I find amusing is that a completely clueless Pakistan, caught in a trap of its own making, is blaming Taliban and India. It is absurd, Mr. Vora, Ambassador Vora. Thank you very much. Always a pleasure जब आपके साथ होता हूँ, बहुत अच्छा लगता है. Would you like me to speak in English or in Hindi? Your choice, sir. Go ahead. Since you're on Republic TV English, you can speak in English. Go ahead, sir. All right. Well, let me just tell you that I've been following this incident for a long time, and I have a lot of Baloch friends. I plead guilty to that. Many of them are in Europe, and a large number are in the United States, where I go every year. We have meetings, we talk about this. I've known all their leaders. So let me put it to you very bluntly like this. The Pakistani establishment thrives on lies. Every time they say that Allah ki qasam, they are lying. Because they do not want to tell the truth to their people. They've been feeding them snake oil for several decades. Now, as far as the Baloch are concerned, sir, it's a very gentle Islam. Mata Hingla's Mandir is there in Baluchistan. It's a very famous pilgrimage stop for Hindus from all over the world. They go there. The mullahs, the jihadis tried to destroy it. The Baloch stood up and said, don't you dare touch it. It's a Hindu temple. You try messing around with this and then see what we'll do. In the last 5 years, I've noticed a change in the tactics of the Baloch freedom fighters. So their problem, their challenge right through has been numbers. It's a huge territory, 45% of Pakistan's total surface area, but very, very few in numbers. So what I've seen in terms of their tactics is, sir, that they've now resorted to what we call suicide bombing. They have the Majid Brigade, which is the suicide wing of the Baloch Liberation Army. Majid, you know this better than I do. Yeah. In the 70s, there were 2 brothers and it is named after them. So the first thing they've done is suicide bombing. Second, they have linked up with other freedom fighters like the Taliban and Pakistan and the Pashtuns. My family comes from Ghazni, sir. I'm a Pashtun, I'm a Pathan, but a Sanatani Pathan. Let me just tell you this. Having linked up with these people, they have got new weapons. Where do these weapons come from? They talk nonsense that we've given it. We don't have a border with them. Have we dropped them by air? No. These are weapons that Uncle Joe Biden left behind in Afghanistan when he was running away. And the Afghan Taliban gave them to the TTP, who have passed them on to the Baluch. So these are the 2 major developments in the last 5 years. So let me also tell you, when the siege was taking place, initially we were told there were 7 terrorists. Then it became 13. Then it became 30. Total confusion and a meticulously planned operation. Obviously, they had inside information because these people, these soldiers, were coming from Quetta to Peshawar. They were coming for Eid or whatever. They were going on rest and recreation. That's the time when you are not terribly alert because somebody else has taken your place. You're going to relax. And the Baloch liberation fighters, freedom fighters, knew exactly what they wanted. Then they have linked up with many other groups. Now they have a Baloch national army. Sir, may I just read to you? I have my mobile right here. Yeah. A Baloch friend sent me a message. Would you permit that I read it to you, Yes, sir? please. This was 2 days ago. And I'm reading the message out to you in English. He said, Ambassador Deepak, we deeply value the fact that you have been speaking up for us. Sir,
what is happening in Pakistan right now with the train, and then he quotes a Hindi film song, Abhi to party shuru hui, which means that these people are not going to give up, Sir. and Pakistan better watch out, sir, because this is not going to, you can't wish this away. Fantasy cannot replace reality. Yeah. The people of Pakistan now understand the state has lost control of 45% of its territory. No, I want to tell you one more thing to both Bahut Baloch and you and Ambassador Vora, and I thank both of you for joining us, because I have some pictures I want to show right now. I have some pictures, you have to see those pictures. That is the tunnel that they talk about, the Mushkaf tunnel, Mushkaf railway tunnel. And those are bodies. We don't support terror, we don't back terror, but look at those pictures. Those are pictures of Pakistani soldiers who've been shot dead, executed, right? We are not backing the actions of the rebels. We're not saying that what they did was right, but we are telling Pakistan that you knew this was coming and you knew this was going to blow up anytime, and it's blowing up in their faces right now. That's the thought I'm leaving all our viewers with. Thank you, Ambassador Vora and Bahut Baloch, for joining us on the show. That's all the time that we had on This Is Exclusive at 7 p.m.